हमारी अभी ड्रामा डल रहा है इसका। तो उसके बाद टेक्सचर लगाएंगे जो छोटे मोटे हैं, तो उसके बाद पेंट की करेंगे तैयारी की। भाई करें तो जो डस्ट है उसको उठा रहे हैं अभी। सर मैं सर्विसर मार रहा हूँ गाड़ी। वो क्या होता है? गाड़ी के लिए सर, जो गाड़ी जब डेंटिंग भी होती है ना, उसमें पुट्टी लगाते हैं, पुट्टी के बाद बेस बना रहे हैं? हाँ जी बेस। बस सर आज हो जाएगा इसका बेस गाड़ी का, बाकी जो उसके पार्ट हैं बाद में उसको करेंगे। बाल नहीं गिरते गाड़ी में जब हम सर्विसर मारते हैं ना इस पर। ऐसे कई बार होता है टोप पे ना लगाई हो तो उस पर बाल गिर जाता है, बीच में आ जाता है वो। ठीक है। बहुत बुरा। क्या हुआ? गर्मी उठाया नहीं जाता। गर्मी बहुत उसकी वजह मैंने चक्कर यही है। हाथ नहीं डल रहा था पहले, इसलिए नहीं, अब हाथ डाला तो फिर डाल दिया। तू अकेला भी आता है ना? हाँ सर्विसर काटने लगे हैं, तो उसके बाद ग्राई शुरू करेंगे इसकी। ग्राई करने के बाद उसको पेंट डलेगा।
फर्श है जिप्सी का, बैक साइड का। बताओ फिर इसके बारे में थोड़ा। इसके बारे में जी 1.5 घंटा लग गया इसको बनाते। बनाया कैसे? हाथ से। ये है मशीन हमारी, ये मशीन है हमारी, बेंडिंग मशीन। इसको इधर से हटा के और इधर फिट करना। पहले निशान लाए। Okay, so we could have replaced the full floor pan, but rust was just in a particular center line, and we decided to just patch up the thing rather than changing the whole. So that's exactly what we're doing right now, patching up, not replacing the whole floor. So we are done with patching up the floor. Now it's the next step. Somebody who has worked on it previously has done red oxide primer, which is not the automotive stuff. I'll show you what it is. सर जो गेट को प्राइमर मार देना उन्होंने, ये गाड़ी को मारा हुआ है रेड ऑक्साइड, तो उसको ख़त्म करेंगे हम। पहले पूरा घिसेंगे अच्छी तरह कढ़ाई करके, उसका प्राइमर डाल के।
पहले हमने नीचे गाड़ी को पेंट किया था, अब इसका फर्श वगैरह हो गया, बाहर से पेंट करना है। स्वेरी वाइट कलर है, इसका नाम है इस कलर का। अच्छा, सीलेंट लगानी है। ये तो थोड़ा सा जो पहले से क्रैकिंग आई है सीलेंट की, तो सीलेंट भरेंगे अच्छी तरह, उसका क्रैकिंग बिल्कुल सही कर देंगे जहाँ क्रैक था।